Hey guys, I hope you're all doing well. Welcome to my channel, Beauty Tips. आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ 4 डॉट की ब्रशेस, जिनमें से 3 है आईशैडो ब्लेंडिंग ब्रश और एक है फ्लैट आईशैडो ब्रश। तो दिस वीडियो विल बी ए डेमो वीडियो स्लैश रिव्यू वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और ये मैंने लिया है नायका से। पहले देखिए इसका पैकेजिंग भी ये ऐसे प्लास्टिक बैग के आते हैं। पीछे में ब्रश में डिटेल्स दिया हुआ है, रिकमेंड टू यूज सब कुछ दिया है, प्राइस दिया हुआ है जी। और मेन बात जो ऑल ब्रशेस कम विद इंडिविजुअल ब्रश कर्व, जो बहुत अच्छा है। पैकेजिंग के फ्रंट में ब्रश का नंबर दिया हुआ है। So the first brush I picked up is PE19. It's a smaller blender brush. It's retail for 225 rupees. ये एक फ्लैट ब्रश है, टॉप साइड पे फ्लफी है। क्योंकि फ्लफी है तो टॉप साइड स्मोकी इफेक्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। The second is PE22. It is eyeshadow blending fluffy brush and it's retail for 300 rupees. It helps to blend strong colors into your crease. The third one is PE23. It's tapered shadow blending brush and it's retail for 275 rupees. It's precise color application onto the crease and adds depth, and pointed tip is ideal for adding depth on crease. The fourth one and the last one is AE25 flat blending brush and it's retail for 425 rupees. It's help to blending eyeshadow on your crease. Okay, I'm using this Wet n Wild eyeshadow palette in the shade Rose in the Air, and I'm taking this transition shade by AE25 brush on my crease. Now I'm taking this pink shade with PE23 brush and pointing to my outer corner of my eyes and blending with the transition shade. And I'm taking now little more. Now I'm going with this orange shade with AE25 again and applying on my crease and blending. Now I'm going with this darker brown shade with PE23 again and focusing on my outer corner of my eyes. Now I'm taking PE22 brush and blending all the colors. Now taking this light shimmery shade with PE19 and tapping on eyelids. Now taking this pink shade again and applying on my outer corner. Now I am mixing these two shades and applying on my lower lash line for smoky effect. Okay, now I am putting highlighter on my inner corner and brow bone. So yeah, these brushes are awesome. These brushes are awesome. This is my favorite brushes. These are really good for money. इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है, फ्लफीनेस है और आई शेडो ब्लेंड करने में बहुत आसानी भी होता है, जो काफी अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ब्रशेस, तो आई डू रिकमेंड टू ऑल बाय दिस ब्रशेस। दे आर ऑसम, अफोर्डेबल।